हेलो और नमस्ते सभी को। आज हम चर्चा करेंगे कुछ बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से हम अपने पीसी या लैपटॉप की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यदि किसी प्रोग्राम की वजह से हमारा पीसी या लैपटॉप हैंग होता है, उसको भी ट्रबल शूट कैसे करते हैं ये जानेंगे। इसके साथ साथ मैं थोड़ा अपने बारे में भी बता देता हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र पुनिया है और मैं नेक्स्ट स्किल्स एकेडमी भिवानी का फाउंडर हूँ। नेक्स्ट स्किल्स एकेडमी से हम पैरामेडिकल के कोर्सेज जैसे ओटी टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी, इस तरह के 10 से 11 प्रोग्राम करवाते हैं जो बच्चे 10+2 में किसी भी विषय से पास होने के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा एमबीए, एमसीए, एमकॉम, ये प्रोफेशनल डिग्रीज, मास्टर डिग्रीज भी करवाते हैं। ये NAAC A+ यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड डिग्रीज हैं जो कि ऑनलाइन होती हैं। इनकी ऑनलाइन पढ़ाई होती है और ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होते हैं। और कंप्यूटर के भी आजकल के चलन के काफ़ी एडवांस प्रोग्राम्स हम करवाते हैं, जिसमें डेटा एनालिटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इस तरह के काफ़ी कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन मोड में करवाए जाते हैं। पढ़ाई और के साथ साथ एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से हम अपने पीसी की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यदि हमारा सिस्टम किसी प्रोग्राम की वजह से हैंग होता है तो उसको भी ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से हमारा पीसी हैंग हो रहा है, और किसी प्रोग्राम की वजह से यदि हैंग हो रहा है तो उसको एंड टास्क कैसे करेंगे। और ये हम थोड़ा इंग्लिश में यदि करेंगे तो दो पर्पज़ हमारे सोल्व होते हैं। एक तो हमें उन टेक्निकल स्किल्स का ज्ञान होगा, साथ में हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो हम छोटे छोटे और सिंपल सेंटेंस की मदद से इंग्लिश में ये सब चीज़ें जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। To know whether a program is creating trouble for the smooth functioning of our system, we just click on the right click on the taskbar. This is the taskbar of our desktop. There are two buttons on the mouse, one is left and right. So we right click the mouse. When we right click the mouse button, there are two options visible on the screen. First one is Task Manager and another one is Taskbar Setting. We click on the Task Manager. When we click on the Task Manager window appears on the screen and it shows which program is using how much resources of our system, like how much percentage of CPU, how much percentage of memory, etc. will be displayed on the screen. If a program is using unusual or more than unexpected resources of the system, it means that program is creating problem in smooth functioning of our system. So we just right click on that program and click on the end task. Computer will immediately stop that program, and afterward we can carry on our activity and restart that program also. So now we close this task manager by clicking on this cross button. So this was all about end task of a program which was creating a problem for in smooth functioning of our system. I mean, our system was hanging or not responding due to that program. Now that program is stopped by our system through the end task command. Now we comes on the second tips or tricks, that is to how to delete the temporary file of our system. For that we press Windows key and R at once, or you can say simultaneously. When we press Windows and R key at once, then run command
dialog box appears on the screen. Now we type percent temp. Temp denotes here temporary, and again percent, and then we click on OK button. As soon as we press on the OK button, this temporary folder windows appears on the screen. It shows all the files and folders available under the temporary folder or in the temporary folder. We can delete all these files. Nothing wrong will happen, and this will definitely improve the speed of our system, because sometimes it has been a long time that we do not delete temporary files and folder. It occupies a lot of space of our computer, and our computer speeds decreases. Now if after deleting these temporary folder and files, our system speed will improve. Control. Now we will click on any of the single file or folder, and then Control plus A. As we press Control plus A, all the files and folders will be selected. Control and A plus command is used to select all the things on the screen. Now we can delete these files. Just right click on this, and this delete command will be visible to you. We will click on the delete. Now what happens? File in use. So computer is saying that these files are in use at present, so the files which are being used cannot be deleted. So we click on do this for all current items. We will skip these files. We are not going to delete these files. Skip, then skip. So now computer has deleted all the temporary files and folder except these 5 or 7 files appear on the screen. These files are not deleted by the computer because these files are in use. Now we can close this window as well, because we have performed our task of deleting temporary files and folder successfully. Third one is recent files. We again press Window and R at once. This Run dialog box has come on the screen again, appeared on the screen again. We just type recent, RECENT, and enter. Why we delete these recent files? Because it has been a long time that we do not delete these recent files. These files and are created by the system for smooth functioning of the system. But if we have not deleted these files for a long time, these files also occupies a lot of space of our computer system. If we have deleted these files time to time, then our computer speed will definitely improve. It helps in improving the speed of our system. So again we click on any of the file or folder, then press Ctrl and A at once, and right click, delete. You can press delete key from the computer's keyboard as well. Both functions are same. Whether you press delete key or you choose delete option after clicking the right button, both commands will do the same thing. Now we can also close this recent folder also, because we also have performed the whole operation successfully. Third one is, after deleting all these files go to the recycle bin, because sometimes it also happens that we
can delete an important or useful files by mistake. So computer gives us a chance to recover those files. First of all, these files goes to the recycle bin. So on daily basis, we delete a lot of files. So recycle bin also a folder and it has a lot of files that also occupies a lot of space on the computer. We can empty that recycle bin, and after emptying that recycle bin, our computer speed will also improve because the space occupied by the recycle bin files will be free up now. So how we delete these recycle bin files, or you can say how do we empty the recycle bin or restore a file from the recycle bin. So just click on the start button and type RECY. This is the recycle bin. This is just like a dustbin at our home. We put garbage in the dustbin at our home, and the recycle bin in computer is used to store the deleted file. So if suppose any one of the file is deleted by mistake or useful for us, or you do not want to delete, then just right click on that file and restore. This file will go to its original location from where it was deleted. So this was the process of restoring a file from recycle bin. And if you want to empty the recycle bin, then just single click on any of the file or folder, press Ctrl A, delete. This will also delete all these files. Or you can use the empty recycle bin command. This command will also empty or delete all the folders and files stored in the recycle bin. So these were some basic tips and tricks of improving our the speed of our PC or laptop. Besides this, we learned about the hanging problem or troubleshooting why our computer is hanging and how to resolve that by the use of end task command. इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि इंग्लिश में आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं और कहीं पे आप कंफर्टेबल नहीं हैं या रिमाइंड नहीं हो रही है वो चीज़, या थोड़ा ये लग रहा है कि इसका सही से वो नहीं होगा, तो आप हिंदी में भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो मैक्सिमम हिंदी लैंग्वेज वाले होते हैं। और अगर आप हिंदी में भी उसको बताओगे तो वो उसको समझ जाएंगे। यहाँ हमने छोटे छोटे सेंटेंस की मदद से ये कुछ बेसिक कंप्यूटर्स की टिप्स एंड ट्रिक्स जानी। इसमें मैंने ये प्रयास किया है कि हम इंग्लिश के साथ साथ नहीं, कंप्यूटर स्किल्स के साथ साथ हम थोड़ा अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करें। और जैसे जैसे आप ये चीज़ें सीखते हो तो इनको आप भी इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो उससे आपको डबल फ़ायदा होगा। आप कंप्यूटर स्किल तो सीखेंगे ही सीखेंगे, इसके साथ साथ आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद सभी।